Hello everyone and welcome to my class. Now in this video I'll be discussing about the birth of Weimar Republic. We are doing the chapter 3 of class 9th history, Nazism and the rise of Hitler. Now in my previous video I have discussed about I have given you a brief background of Nazism and Hitler. Right, so the main topics now will be starting and we'll talk about Weimar Republic. Now before Weimar Republic, one thing that we should know that First World War started in the year 1914 and it ended in 1918. 4 years the war was going on in on European soil, right? And different nations were fighting in this war, the European nations. Then the end of the war, the result of the war was that Germany was one of the defeated nation, right? And when Germany defeated in the First World War, what happened after Germany's defeat, that we will discuss, and how this defeat was taken by the people, that also we'll discuss. This is very important from the point of view because these were the circumstances which gave rise to the Hitler. So let's talk about the Weimar Republic. Now Germany defeated in the First World War. Then this defeat led to the abdication of the German throne. The ruler, he escaped, he flee, and the throne was left vacant, right? So this was an opportunity for the political parties in Germany, and a meeting was held. National Assembly met at Weimar. Weimar is a name of a place in Germany, right? A meeting was held of all the political party leaders, and they decided that election needs to be done in Germany, and the election has to be on the basis of universal adult franchise including women. So through elections they'll be forming a new government. They'll be forming a German parliament. German parliament is called Riksdag, right? So this is how a new government formed, and a new federal government is made in Germany. Now this was the change that came after the First World War. Ruler was monarchy ended and a parliamentary government formed in Germany, right? Now this newly formed republic, this newly formed government faced many challenges, and the biggest challenge was that they were forced to accept the Treaty of Versailles. Means the war ended and the winner nations, they have imposed a very humiliating treaty on Germany, and this new government, the Weimar Republic, was responsible to accept the terms of treaty. Now let's talk about the treaty, peace treaty of Versailles. This is very very important from exam point of view, right? So peace treaty of Versailles, Versailles is again a name of a place in France. तो एक ट्रीटी इम्पोज की गई जर्मनी पे, और जो कि बहुत ही शर्मनाक ट्रीटी थी. तो वेमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल है उस ट्रीटी को एक्सेप्ट करने के लिए. And this was the reason that German people started disliking this newly formed government. Now let's talk about the terms of the Treaty of Versailles that was imposed on Germany. Now Germany lost its overseas colony. जर्मनी के जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज थी, जिन जिन नेशंस पे उसने क्या अपना होल्ड बना रखा था, जीत रखा था, उन सारे नेशंस, उन सारे रीजन्स को जो है वो जर्मनी के हाथ से चले गए. देन 1/10 of its population was killed in the war. 13% of its total territories were taken, right? Taken by the winner nations. 75% of iron and 26% of coal mines of Germany was taken by France, Denmark, Lithuania and Poland. These were the winner nations who took these rich iron and coal deposits of Germany. उन पे जो जहाँ जहाँ जर्मनी में जो आयरन और कोल डिपॉजिट्स थे, उन रीजन्स को कैप्चर कर लिया और आपस में बांट लिया विनर नेशंस ने, जो कि फ्रांस, डेनमार्क, लिथुआनिया और पोलैंड थे, राइट? देन जर्मनी वाज डीमिलिटराइज्ड टू वीकन इट्स पावर.
जर्मनी पे ये प्रतिबंध लगाया गया, ये रोक लगाई गई कि जर्मनी अपनी आर्मी की संख्या 1 लाख सोल्जर से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। मीन्स जर्मनी की एक लिमिटेड आर्मी होगी ताकि वो फ्यूचर में ऐसी कोई लड़ाई ना लड़े। टू वीकन इट्स पावर, जर्मनी वॉज डीमिलिटराइज्ड. Then Germany was made responsible for the war. The guilt of the war was imposed on Germany. That because of Germany the First World War started. जर्मनी के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और लड़ाई ने इतना बड़ा रूप लिया, और जिसकी वजह से जर्मनी वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, राइट. एंड ड्यू टू दैट a heavy war indemnity was imposed on Germany. War compensation जर्मनी पे इम्पोज किया गया अराउंड 6 मिलियन पाउंड्स. मतलब जितने विनर नेशंस होंगे वो जर्मनी से 6 मिलियन पाउंड्स तक का कंपनसेशन लेंगे. इतना हैवी कंपनसेशन जर्मनी पे इम्पोज किया गया, जर्मनी पे करेगा. रिसोर्स रिच राइन लैंड गिवन टू एलिस. मीन्स जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सफुल लैंड था जर्मनी के पास, राइन रिवर, राइन जो है वो जर्मनी की मेन रिवर है, और उसके आसपास का जो राइन वैली है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जानी जाती है, जर्मनी का मेन इंडस्ट्रियल सेंटर है. उससे भी जो एलिस, जो विनर पावर्स थे, उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया अगले 15 सालों के लिए. ना ये जितने भी टर्म्स थे, इससे आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि जर्मनी की जो पावर थी उसको एकदम ही कम कर दिया गया. उससे वो सारे इम्पॉर्टेंट रीजन्स छीन लिए गए जिससे कि जर्मनी की इकोनॉमी साउंड थी, और जर्मनी को हाथ में कुछ भी नहीं बचा था. उसकी पॉपुलेशन बहुत हद तक मर चुकी थी, उसके टेरिटरीज उससे ले लिए, उसकी कॉलोनीज उससे छीन ली गई, और जर्मनी एक ऐसे, और ऊपर से जर्मनी के ऊपर वॉर कंपनसेशन भी लगा दिया गया, वो भी अमाउंट बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से अब जो गवर्नमेंट बनी थी जर्मनी में, वेमेर रिपब्लिक जिसका नाम था, दे स्टार्टेड फेसिंग अ चैलेंज हाउ टू फुलफिल दीज कंडीशंस. जब उनके हाथ में कोई रिसोर्सेस नहीं है, जब उनके पास मिलिट्री नहीं है, जब उनके पास इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो वो किस तरह से इतना हैवी अमाउंट जो है वो विनर नेशंस को पे करेंगे. और उन्होंने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया था. तो इस वजह से वेरी शेमफुल और वेरी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी जो विनर नेशंस ने इम्पोज की थी जर्मनी पे, उसे एक्सेप्ट करने का काम वेमेर रिपब्लिक ने किया था, जिसके लिए जर्मनी में पीपल वर hating this newly formed government, right. So this is all about Treaty of Versailles, what happened after the First World War, Weimar Republic, how it formed, and what challenges the Weimar Republic faced. We'll be discussing the challenges of Weimar Republic in detail in the next video. We'll continue the same thing, but this video is important for Treaty of Versailles. You should know the terms of this treaty, because this was one of the reason why people gave preference to Adolf Hitler, right. So note down these terms, this is very important. Please like, share and review and subscribe this channel. Thank you.